My Urdu is really terrible, so I'm hoping that I can answer questions in English. Definitely, yes. Yeah. Yeah. Okay. And मुझे लगता है ये है कि we will because the questions that I have written they are also in English. So मुझे लगता है ये है कि we will remain bilingual. Kaleem, is it so? Gee, I was just thinking just to make it balanced, then someone will have to be really Urdu, like Mirza Ghalib Ali Urdu. Okay. Then can I say कि कौन शॉट देगा? मैं तो बिल्कुल मिर्जा गालिब वाली उर्दू नहीं, कहीं दूर दूर मिर्जा गालिब वाली उर्दू. मेरा तो पंजाबी में करने का मूड था यार सेशन. And then by the way, why not? आप पंजाबी के जबरदस्त वो क्या कहते हैं एग्जांपल्स दे सकते हैं. That would be fun. That would be fun. अच्छा जी, अच्छा हमें हमें जो असल में जो कंट्रोल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ वो यूपी कर रहे हैं. यूपी, आर यू विद अस? यस मैम, हम है. ठीक है, ठीक है. सो गाइस, ये कि आई थिंक बस ये कितनी देर में शुरू करने लगे, लाइव करने लगे यूपी? लाइव ऑलमोस्ट हमने स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है. अच्छा, वो मैंने तो नहीं स्टार्ट करना, वो भी आप करेंगे, राइट? ओके. नहीं, we are live at Zoom. Oh, we're live. Yeah. No, यूपी मेरा मतलब कहने का ये है, can everybody listen to us? Yeah. We can hear you loud and clear. No, you can, which is the broadcast room. I'm talking about the audience. Yeah. Audience भी आपको बिल्कुल सुन सकती है. They have started listening. Very nice. So cool. I thought we are in the broadcast room, not with the audience. Interesting, guys. Cool. So let's start our session then. Can we? Great. All right. So, Ji, Kaleem and Yubi, I need आप लोगों की तरफ से. So should I start? जी, perfect है जी. Let's start. Very nice, very nice. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम ऑन बोर्ड. मुझे मालूम नहीं था कि हम ब्रॉडकास्ट रूम में नहीं हैं, हम लाइव स्ट्रीम में जा चुके हैं, तो आपने बिहाइंड द सीन वाली हमारी गुफ्तगू भी सुन ली है, which is I think which is not bad either. So the whole purpose behind today's session, as you guys know, is to engage with the startups. हम startups के साथ engage करें, वो हमसे कुछ सवाल पूछें, लेकिन before they start asking us the questions, we have an expert panel sitting with us. So we will go to them, we will ask them some questions. उनके कुछ जवाब हमारे पास आ जाएंगे, कुछ discussion हमारे पास आ जाएगी, and then of course we would love to take your questions. And my understanding is that you are also using a TechWorks platform. You are already briefed about it. और वहाँ पे जगह बनी हुई है, आप लोगों ने अपने सवालात जो हैं वो वहाँ पर लिखने हैं. Or then Kaleem and the other administrators of NIC will send us those questions, and then we will start giving you the answers of your questions. So let me very quickly introduce my power-packed panel here, and I'll start with Kashif Effendi. Kashif Effendi Saab ji is heading Ream Rice. Ream Rice कहने को rice है, which means commodity है, लेकिन Kashif साहब ने उसको एक high-end brand बना दिया. Now that is the power of marketing, and today we will discuss the power of branding, the power of storytelling. Kashif has a phenomenal background of FMCG. इनकी मुझे जो समझ में आती है, काशिफ की खासियत ये है कि वो किसी भी चीज को पकड़ते हैं और फिर उसको वो पावरफुल ब्रांड बना देते हैं. तो आज हम बहुत सी बातें इसके इर्द गिर्द भी करेंगे. Then I have an entrepreneur sitting with us, सलमान वासे. और सलमान वासे, आप लोगों ने इनके जो प्रोडक्ट है, अगर मैं गलत नहीं कह रही, चाय खाना, right? Am I right? Yeah, cool. Yeah. So, Chai Khana started off, and I think Chai Khana has become a trendsetter. So Salman Wase and the team has done a wonderful job. Salman has a corporate background as well, but now I believe they're rocking in the entrepreneurship scene, and we will get a lot of feedback from them कि corporate की branding में और फिर startup की branding में क्या फर्क होता है. And Wase, that's going to be my first question to you, and Sure. then we will. Then we have Aisha sitting with us all the way across the seas. Welcome, Aisha.
Aisha is representing Nike here. Nike itself is a huge brand. और नाइकी की डिजिटल मार्केटिंग भी है, नाइकी की कन्वेंशनल मार्केटिंग भी है, नाइकी की पर्सनालिटी ड्रिवन मार्केटिंग भी है. और नाइकी ने, एंड आई बिलीव आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में, अगर जिसको नहीं भी पता है, नाइकी जो है वो मार्केटिंग के लिए ट्रेंड सेक्टर है. तो एक जूता जो कमोडिटी था, किस तरह से उसको उन्होंने ब्रांड बना दिया. और सिर्फ ब्रांड नहीं बना दिया, वो जूते के लिए एक, जैसे एक और ब्रांड है पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट, हम कहते हैं ना इजी पैसा, तो इस तरह से नाइकी बन गया, वो जूता बन गया कि वो नाइकी है, कोई भी ब्रांड हो वो नाइकी हो जाता है. सो दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट जब हम आयशा से गप लगाएंगे. And then we have Atif from Pepsi, right Atif? अगर मैं कोक कह देती तो आते मुझे सारी उम्र के लिए डिसोन कर देते. मैं तो टॉप 9 चला जाता. So we have a brilliant guest from Lahore, Atif. And again, Pepsi जो है, it's a huge brand. आप लोगों को मालूम है किस तरह से वो कंज्यूमर के साथ एंगेज करते हैं, किस तरह से वो 360 डिग्री मार्केटिंग के मैसेज को क्राफ्ट करते हैं और फिर आप तक पहुंचाते हैं. आपसे मुराद भी द कंज्यूमर्स. And so this is my power pack panel. मैं डॉक्टर फरा आरिफ आपके सामने हूँ आज. मैं अपनी कोई बात नहीं करूँगी, थोड़ी बहुत मार्केटिंग मुझे भी आती है, लेकिन आज मैं मूड में हूँ सीखने के. So we will be learning from our panelists. I'm also running a startup. It's a 2 years old startup, and learning a lot from you guys, and of course from anybody that I meet. So let's jump on to my first question, and my first question is from Salman Wase. So Salman, there is a typical way of marketing when we talk about any MNC. कोई बड़ी कंपनी है, उसका एक बड़ा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, वो बड़े तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं. But when it comes to startup, अगर आप मेरी बात करें, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और टीम तो बिल्कुल भी नहीं है. तो बेचारा एक फाउंडर होता है, को फाउंडर होता है, एक कोई उसका कोई असिस्टेंट होता है, and this is the humble beginning. So I would like to know your insights that when we start off as a startup, so how should we be tackling this marketing, and how different it is from a typical marketing which is happening in any MNC? Over to you, Salman. Ji, Assalamu alaikum. Thank you for the question. I think it's one of the most important question for the startup. और मेरे ख्याल से आज की कॉन्फ्रेंस का, I think this is a foundation question. मेरे ख्याल है कोई रनिंग कंपनी या कोई बड़ी मल्टीनेशनल की अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देख लें और अगर किसी स्टार्टअप को देखें, आई वुडंट से दे आर वेरी डिफरेंट बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग रिमेन द सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट इज देयर इज अ लॉट मोर टू डू इन द स्टार्टअप. When you're starting your company, which is very small, as you said, there is no money, no people, maybe just you yourself sometimes. So how is it different? Is what you are at a stage where you are talking to idea validators, you're talking to co-founders. These are all marketing ke areas hain sare. Marketing does not always mean that you're always talking to directly to your customers. Sometimes at the end of the day, you will talk to your customers mostly, but होता ये है कि आपके कस्टमर्स तक आपकी स्टोरी किसी तरीके से पहुंचती है स्टार्टअप की. तो वो आइडिया वैलिडेटर्स के थ्रू पहुंचती है, को फाउंडर्स के थ्रू पहुंचती है, इनिशियल एम्प्लॉइज को आपने मार्केट करना होता है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समटाइम्स इन्वेस्टर्स को मार्केट करना होता है. सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी डिफरेंट एंड इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी. द अपॉर्चुनिटी इज टू डिफाइन हु यू आर. In a multinational, you don't get to define who you are. When you're starting your own company, it's your ball game, and nobody's going to say nahi tum ye nahi kar sakte Salman. It's up to you what you believe in. So it gives a great opportunity who you are, and more importantly aap kiske liye hain, aap kya problem solve kar rahe hain. I think these are the pertinent questions jo startup ko, before jumping into how to advertise and what to advertise mein ghusne se pehle, you have to define who you are, what problems are you solving. Because a lot of research has showed that people buy very easily when you solve their problems rather than when you're not solving any problem. More importantly also आपको अपनी value proposition define करने का मौका मिलता है. So for example, जब हम चाय खाना शुरू कर रहे थे, so चाय खाना का idea जहाँ से आया वो किस तरह था कि me and my wife were driving down from Murray
with some family members, and we're talking about कि यार इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठ के अभी हम जाके चाय पी सकें. Marriott जा सकते हैं, but that's not a typical place you want to go. So that's how Chai Khana came into being, and we are a tea drinking nation, but there was no place to have tea. So the tagline that came out to be was for the love of tea, although the communication that went out through influencers was coffee is not our cup of tea, और उर्दू में हम कहते थे मेरे लिए चाय ही काफी है. So we took on coffee directly. We had a positioning, we positioned against coffee, and that's what we are even today. So I think coming back to the point, a startup gives you an opportunity to do all this while you are at a multinational or a running company. You can't do that. Also, startup gives you an opportunity to experiment. आप छोटे बजट के साथ, नो बजट के साथ कुछ किसी कस्टमर बेस के साथ कुछ ट्राई करें, किसी के साथ कुछ, जिसे आमतौर पे A/B टेस्टिंग कहते हैं, एंड फाइंड आउट व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, व्हाट्स नॉट. स्टार्टअप में ये अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है. स्टार्टअप में इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू गेट इट डन. The mantra is to get it done rather than to be perfect, and keep learning as you go. So I think these are the few things that are very important for from a startup marketing strategy point of view. Very interesting. So what I've understood, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी स्टोरी सुनानी है. So the moment you say that who are you and what you can do for others, which means your customers or your potential customers, so आप उनको स्टोरी के अंदर weave in करें. So I'll go to Aisha then. So Aisha, Nike is not just a brand. Nike is a story. Nike has a heritage, right? So give us some tips as a startup, because Nike has been crafting its story and it has evolved over the years with its story, and then its branding is around that story. So give us some tips that as a startup, because as Vasa said, that the first and the most important thing is who are you and what you can do for others. So give us some pointers that how can I tell my story. Over to you, Aisha. Yeah, sure. Thank you so much. I just want to say before I get started that I'm so excited to be here representing Nike as well as my own personal journey. I'm very excited to be able to connect with the entrepreneurs in Pakistan, in Lahore, Islamabad, Karachi. I would love to build my network in Pakistan. So very excited to connect with everyone who I've seen on LinkedIn, etc. So yeah, I'm representing a group that really focuses on impact marketing. So my perspective is going to be more corporate. I realize that this is very much centered on the startup and the entrepreneur. So I'm happy to take some of these tips that I've learned over the last couple years and try and reframe them into a startup lens. But just to build on what Salman was saying, for me, it's yes, what problem are you solving? Who are you? But also, what is beyond the problem? What is the mindset of your customer? To me, this is a really big piece of building a brand story. And of course, I think Nike has a legacy of doing this really, really well. But it starts with a consumer insight, a customer insight that goes beyond even the problem. So I think of, what Nike has done really, really well is be authentic throughout the ages. And when I say authentic, I really mean authentic to culture. And really understanding what is driving culture forward and how to partner or play into or elevate and celebrate the mindsets that make culture move forward. So for me, I think it makes things a little bit more interesting when you can solve problems, but do so in a way that is inspiring, is innovative, and then enables your consumer base to actually take action. So for me, authenticity is a huge piece of the branding and the storytelling that you're asking about. And I think that's a continuous cycle, a continuous journey that we are all always oriented towards. So for me, knowing that
at a corporate level, we are solving problems, yes, but we are also trying to understand what is the insight that makes a very particular consumer base inspired, and how do we serve that? So for me, it also comes down to representing voices that are not always represented in mainstream society. I think that is a core value of what we do every day. And so representation matters. And that is something that I think about all day, every day. When it comes to representing voices and stories and narratives that are not often heard or told, I find that to be my specific job in bringing those to life. And I think that actually benefits society as a whole, because we're recognizing, for us, and in particular my role in impact marketing, the layered effects of discrimination, and wanting to serve consumers who are typically underserved. So I know it means very different things in a place like the US versus Pakistan, and the issues and problems are very, very different. But I still think that representation is an important factor for any brand to bring in. And so I would say authenticity, representation, and then probably lastly, I also think authenticity needs to flow throughout everything that you do, from your company culture to the products that you're serving up, to the consumer base that you were and at the end of the day serving. So to me, authenticity is not just from a product lens or a consumer lens, but it is across everything. So to me, it comes down to those two things is what I would probably start with. Oh, cool. And again, my second question, the next question is also to you, Aisha. If I'm not wrong, I recently have seen a post, and the post is telling us about specially designed shoes for the medical staff by Nike. So I've seen it now, and they're not like typical Nike. They seem very different. It seems that they have done some product development as well around that, because if you are a front end staff as of today, you should be standing like perhaps for like 18 or 20 hours straight, perhaps in some situations. So tell us about that. So there is a situation, for example, COVID-19. And then there is an opportunity for the brand to remain authentic. And the story, what I have understood from Nike, is that it wants to connect with the consumer. So in this context, if you have to give us a tip, so for example, there are many startups here in Pakistan in education sector, in food sector, in fashion products, and so a lot of startups are working. So can you think of any example where you can tell us that you said this is the way you connect? Because authenticity means what? So if you can pick up an example and explain that I think that would be awesome. Sorry, I put you in a difficult spot here. Do you want me to speak specifically to that particular sneaker that was, or the opportunity around it, or another example? I think opportunity around it, and if you are comfortable with another example, please go ahead with that. Yeah, so unfortunately, I didn't get the pleasure to work on that particular project, but I'm familiar with the opportunity that was, I think, that was filled by Nike, and I, of course, am inspired by the chance to use the influence and the expertise and the innovative capabilities of a corporation and a brand like the one I work for, to be able to create outsized impact beyond its core business. And so in that case, I believe it was a rubber outsole, so it's a non-slip. It's also hypoallergenic, I believe, and then it's like easy on, easy off. So a couple different like innovations, I would say, that are factored into that specifically. But when it comes to impact marketing, I do think there is a chance to, I would say, pioneer a new marketing model.
So rather than one way or I think external communications and PR, I think in this day and age, consumers are a lot more savvy at understanding both internally and externally how the brand and how the company and corporation, startup, if you will, is positioned. So what we are trying to do and what my team kind of focuses on is really pioneering a new marketing model that looks holistically at not only the product and that specific customer or community that it is serving and elevating and celebrating, but also all the factors that go around that, from how we do hiring of specific communities to bring diversity into our business, how we do give back and what the give back models look like, how do we provide mentorship and tools to young people who are interested in being part of the brand, as well as I think internal processes and evolving internal processes to make them more easy for us to get work done. So I think there's a whole host of factors and more like a wheel probably that in my mind, if at the core of it is our core business, that impact marketing and being able to connect, I think, positive results, positive impact on society, along with sales, actually expands and amplifies the gravity of a brand within society. So I can give an example of that. I think last summer we were able to start a mentorship program, an accelerator program for very young entrepreneurs of particular underserved communities in Chicago, Atlanta, and New York. And it was an amazing program. And then that also helped serve and understand that community better. So there's, I think, many examples that I can draw from, but I think it's not just about the core product. It's also about the people and society that we're serving. And so at a brand like Nike, where our impact is massive, oftentimes, I think we have to start thinking about not only the core product and the core business, but also the future of that, and underserved communities that are not often brought into the fold. So I think that will help us, I think, extend and ultimately give longevity to the brand. Right. So what I've understood so far, so आपका एक अपना brand है, उसका एक अपना मैसेज है जो आप क्राफ्ट करते हैं, आप लोगों तक लेके जाते हैं, लेकिन आप अपनी जिस मैसेज को आप क्राफ्ट कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप इम्पैक्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. तो इट हैज टू बी एन इम्पैक्ट ड्रिवन स्टोरी, राइट? इट हैज टू बी एन इम्पैक्ट ड्रिवन brand, and that impact can be, as you said, that it can be that impact can be created directly with your audience, but it can be created somewhat not directly, but again it will give you the depth. आपके brand को ही depth मिलती है, आपकी engagement को ही depth मिलती है. That is understandable. Cool, thank you. Over to Kashif. So Kashif, what Aisha is talking about, Aisha authenticity की बात कर रही है. आयशा एक कोर मैसेज की बात कर रही हैं, और फिर आयशा कहती हैं कि वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कैंपेन के लिए नहीं होता, वो आपका पूरा एक फ्लो में चलता है, इंटरनल एक्सटर्नल. आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन हैज टू बी अराउंड दैट ऑथेंटिक मैसेज दैट यू वुड लाइक टू पास ऑन. नाउ रीम राइस, एज वी अंडरस्टैंड, इज अ कमोडिटी, राइट? तो बहुत से चावल हैं, आप किसी भी दुकान पे जाएं, आप चावल खरीद लें. तो रीम राइस ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, एक स्टोरी क्राफ्ट की है. तो आप हमें बताएं कि वो स्टोरी जब आपने क्राफ्ट की तो उसके अगर 3-4 पर्टिकुलर एंगल्स हैं वो कौन से हैं, सो दैट एज अ स्टार्टअप इफ आई वांट टू डेवलप माय स्टोरी तो उन 3-4 एंगल्स पे मुझे फोकस करना चाहिए. ओवर टू यू काशिफ. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Dr. Farah, and thank you everyone for having me here. पहले तो मैं थोड़ा सा एक सवाल जो मेरा ख्याल है हर स्टार्टअप को अपने आप से पूछना चाहिए बिफोर आई गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ रीम एंड हाउ स्टार्टअप्स कैन अडैप्ट इज कि ये पंगा लिया क्यों हमने. क्योंकि मुझसे जब कोई आके पूछता है ना कि ये मैंने, और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनसे गप लगती है, तो उन्होंने कहा जी ये हम लॉन्च कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार ये इसकी जगह जो दूसरे मिल रहे हैं
उसको छोड़ के मैं ये क्यों खरीदूं आपसे? तो वो जवाब स्टम्प हो जाता है। फिर आप पूछते हैं कि आपने ये स्टार्टअप शुरू क्यों किया? उन्होंने कहा पैसे कमाने ने। तो ये जो पैसे कमाने ने है ना, ये सबसे बड़ा ईवल यहाँ है कि अगर सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो ये सिकंदर सुल्तान जो शान फूड्स के, उन्होंने मुझे खुद बताया था कि वो बंस रोड पे ठेला लगाते थे छोले का। तो लाहौर में भी चने बहुत खाए जाते हैं, अगर यहाँ चने का ठेला लगाएं पैसे बहुत कमाए जाएंगे। तो ये जो हमारे I think Tom Goodwin थे digital Darwinism वाले, he came to Ad Asia and he actually did a scan of the 10 most successful startups in Pakistan. And you know what his single observation was? He said they're all focused on funding and none of them are focusing on people. तो सबसे पहला जो पॉइंट आई थिंक सलमान ने भी बात की, आयशा ने भी, कि is our business people centered? Is it solving a problem? Is it about a need that we have seen around us? Like सलमान का बड़ा पर्सनल था कि यार यहाँ चाय नहीं मिलती अच्छी, तो वो it has to, and the insight that Aisha was talking about has to flow from something which is around your world. कि यार मुझे कोई तकलीफ है जिसको मैं देख रहा हूँ कि सॉल्व हो सकती है. Because when I talk to NIC, आपके इधर भी आया हूँ, कराची में भी 90% जो मुझे मिले वो धोबी को ऑनलाइन ले आए हैं, इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन आ गया है, दर्जी ऑनलाइन आ गया. मतलब ये सारे प्रोफेशंस हैं ऑलरेडी, उनको सिर्फ ऑनलाइन लाने में कोई हमने तीर नहीं मारा. तो मुझे लगता है कि जो इथॉस है ऑफ व्हाई यू आर स्टार्टिंग अप, जिस तरह आपका मुझे पर्सनली पता है टेक वर्क्स, नाउ दिस इज समथिंग यू genuinely believe from the core of your heart कि यार टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए. And whenever you and I have met, that passion comes out very, very strongly because you believe in this and you are going against the tide, even though people were hesitant in the beginning. You just kept at it. And if you had said to me कि यार मैं पैसे कमाने के लिए शुरू कर रही हूँ, तो you know it would have been a completely different story. But you wanted to change something, you wanted to see something happen which would transform lives. So I think the starting point of everything that a startup does has to be, do you believe in what you're doing, and is it close to something that you're feeling? Or even if it's an opportunity based thing, it has to be something which is rooted in the world around. Having said that, रीम राइस का जिस तरह आपने कहा, जब मैं आया था तो ये स्टार्टअप तो फिर क्लीन स्लेट मिलती है. मुझे तो ये बहुत बुरी हालत में मिली थी, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थी जब ये मैंने टेक ओवर किया, एंड इट हैड ह्यूज वर्किंग कैपिटल इश्यूज. तो मेरे 1-2 साल तो सिर्फ इसकी फंडामेंटल्स को ठीक करने में लगे. ब्रांडिंग पे तो मैं बहुत बाद में आया. But what the initial thought was that I don't know the category, so let me understand. And I think this is again something I asked artists is, how well do you know your category? या जिस चीज में आप जाना चाह रहे हैं. So there's something called strategic brand analysis which you do, which is understanding yourself, understanding your competition, understanding the market. And it took me almost 6 months to crack the rice market. कि इसकी consumer insights क्या है, लोग क्यों खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं. And then I understood that length of rice is something that is preferred. So the longer the rice grain, the more people think it's good, besides taste and smell and everything else. And this was being communicated in a world over, by the way, because मुझे शुरू से ये था कि global rice brand बनाना है, not just Pakistan. तो ये शुरू वहीं से किया था, sites वहाँ थी. And I realized कि दुनिया में सारे कोई उस length को communicate नहीं कर रहा in a way. They're using nomenclatures like extreme and ultimate and grand, you know, WWDE के wrestlers लगते हैं कि आ गए मैदान में. So when I wanted to do it, now one of them, the technical term was AGL, which is average grain length. So again, the second lesson for me as a startup is you don't think like a marketer, you think as a consumer. So I asked my wife, I said, honey, what is a 8.2 millimeter AGL versus 7.8? What does it mean to you? And she said, I don't know. What does it mean? And I said, ये ultimate, grand और extreme, इनका क्या मतलब है? तो वो भी similar ही लगते हैं. तो हमने उसको कर दिया consumer idiot proof जिसे कहते हैं कि यार this rice will grow to be 3 times its uncooked size. This will grow to be 2.5 times. This will grow to be 2 times. So this was a simple way of communicating the same thing, which could have been done in a very complicated way, but you do it in a way that consumers को समझ में आ जाए. And then there was a whole process about, obviously I had Ogilvy support because Asim, the CEO, was my account manager from before. But even if you don't, get any freelancer who can help you to bring alive that concept of positioning that you've arrived at, which differentiates you from obviously what the others are doing, because nobody else was harping on this. And we said we're going to do it, and we're going to create a noise about this in a way that people understand. Another aspect about branding and marketing, I think, which startups miss is कि logo और packaging को समझते हैं कि marketing है. अच्छी packaging हो गई, अच्छा logo बन गया. Branding actually is the entire supply chain. और इसमें I think पाकिस्तान में इतनी बड़ी opportunity है
because हमारे यहाँ I'm an exporter of rice. I can tell you एक sample जाता है और माल कुछ और जाता है और repeatedly कुछ और जाता है. So there's such a huge opportunity. I mean, I export rice at 20% above anybody else's rice in Pakistan. Same rice. So my rates are 20% higher. Why? Because I give consistent quality. और उसके लिए जो मुझे पीछे करना पड़ता है ना, वो एक जिहाद से कम नहीं है पाकिस्तान में. आतिफ विल टेल अस कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी पोटैटोज में, उसका कितना बड़ा रोल था इन इंश्योरिंग कि लेस कंसिस्टेंट मिले. बिकॉज हमारे यहाँ ये क्वालिटी इश्यूज, बेसिक डेसेंट इश्यूज जो हैं कंसिस्टेंसी के, बहुत ग्रेव हैं. तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी कि टू इंश्योर अ कंसिस्टेंट सप्लाई चेन, so that repeatedly, if I go to Chai Khana and I get a great cup of tea once, and next time I go and it sucks, that's the end of the brand. So consistency, I think, is something else that startups need to work at almost vehemently. तो डिफरेंशिएशन हो गई, जो बाकी उन्होंने बात की मैंने उसको कैच किया. गप्पें तो बहुत कुछ लग सकती हैं. और एक चीज और जो मुझे सुनने मिलती है, जो क्रिटिसिज्म है जब मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू, सो जो गुरुज हैं सो कॉल्ड स्टार्टअप्स के, वो कहते हैं नो, इट हैज टू बी चीपर एंड फास्टर. And to me, cheaper and faster can be copied easily, but if you are uniquely differentiated, then it's difficult to, it sets an entry barrier for you, or Yes. for someone else to get into your business. But it's tougher to do. I mean, chawal mein it wasn't easy. Ab hum value added pe ja rahe hain. So we are taking rice as an ingredient and we've just created a set of desserts. We've gone into soup. We are coming into 20 other product categories, which again will have its own unique set of differentiation, and each one of them has been designed keeping in view what our current state is in Pakistan and abroad. And I always have a global outlook, because I think why not? Yeah, why is it कि सिर्फ Walmart में शान मसाला है पाकिस्तान से? Why can't other brands be there? So I think opportunities हैं बहुत. Right. So what I've understood कि अगर मैं स्टार्टअप हूँ तो एक तो मुझे ऑथेंटिक रहना है, इन द सेंस कि मुझे कंज्यूमर इनसाइट्स पता होनी चाहिए. Absolutely. और वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हूँ तो मैं अपनी साइंस में नहीं बात करूँ, मैं आर्ट्स में बात करूँ. और जो कंज्यूमर है वो आर्ट्स में बात कर रहा होता है. तो कंज्यूमर की लिंगो, उसकी अंडरस्टैंडिंग इट शुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, ताकि मैं अपने मैसेज में उसको क्राफ्ट कर सकूं. सो दैट्स वन टेक अवे व्हिच आई हैव. द अदर थिंग दैट यू आर सेइंग कि जब आप कंज्यूमर की इनसाइट्स को लेते हैं तो फिर अपना मैसेज उसके अराउंड क्राफ्ट करते हैं, लेकिन आसान काम नहीं है. सो योरसेल्फ यू सेड दैट यू स्पेंड लाइक 6 months देयर. So and I can tell you, मेरा 20 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी जाके लोगों से पूछती हूँ कि तुम लोग को क्या चाहिए, और मैं उनके साथ बैठती हूँ. सो आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे सब कुछ आता है. सो एक जो लर्निंग ये है, बीइंग अ ट्रू मार्केटर, यू हैव टू बी ट्रू विद योर कंज्यूमर, व्हिच मींस कि आपने कंज्यूमर्स के दरमियान में रहना है, उनसे इनसाइट लेकर आनी है. तो आपको जो बात अच्छी लगती है, समझ में आती है, वी डोंट केयर. कंज्यूमर को जो बात अच्छी लगती है उनको समझ में आती है, वी केयर अबाउट इट. And that's very nice. So now I'm going to Atif, and of course Pepsi as an organization, एक huge legacy है, बहुत ज़्यादा strict processes हैं जो आप लोग follow करते हैं. That's what my understanding. और बहुत उसका क्योंकि strict processes हैं तो वो steps हैं और वो time tested steps हैं. So जैसे मैंने काशिफ से भी ये सवाल पूछा, आपसे भी मैं इसी तरह से सवाल पूछ रही हूँ कि जब हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, एंड काशिफ ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है वो सिर्फ आपका लोगो नहीं है, इट्स डीपर देन दैट. सो एज ए स्टार्टअप, जब मैंने और स्टार्टअप बेचारे के पास ना बिल्कुल टाइम नहीं होता वैसे, बाय द वे, उसको बस मोटी मोटी बातें आप बताएं कि भाई ठक 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 ये करना है, हम कहें वेरी गुड, हमने ये करना है. तो आप मुझे ये बताएं कि व्हेन आई लुक एट द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, so बहुत सी बातें हमने की हैं, but I want you to kind of give me the summary so that I can move forward. So for startup perspective, what would be the strategic marketing? Jay. Assalamualaikum. Can you all hear me? Jay. All right. Firstly, thank you for having me here. Great honor to be part of such a remarkable panel. So जब मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो दो ऐसे लफ्ज हैं मैं सुनता हूँ तो मेरा दिल डूब जाता है. एक स्ट्रेटेजी है और दूसरा है क्लटर ब्रेकिंग. आई थिंक इन दो से ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड्स जो हैं वो कम है इस फील्ड के अंदर, बिकॉज एनीथिंग अपेरेंटली इज स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग वी डू इज अपेरेंटली क्लटर ब्रेकिंग. सो
इन दो से मैं बड़ा परेशान होता हूँ. When I try to think of strategy, and I'll try to simplify it more so for a startup, I think एक model था जो मैंने काफी पहले पढ़ा था, and I try to use that every time I'm cracking a business problem, and that's OGSM: objective, goal, strategy and means. So सबसे पहले तो objective आ जाता है. I think सलमान साहब spoke about it, काशिफ साहब spoke about it, which is आप exist क्यों करते हैं, आप किस problem को solve करते हैं, क्या insight है आपकी, and then Aisha talked about being consistently authentic to it, right? So सबसे पहला मसला आ जाता है कि आप what problem are you solving? That becomes the objective of what you're doing, right? Einstein said, I believe, that if I have an hour to solve a problem, I'll spend 55 minutes defining the problem and then 5 minutes actually solving it, right? And I think hum sab ki ek instinct hota hai to jump to the solution. The solutions are the fun parts, right? The taglines are exciting, campaigns are wonderful to work on, doing a price off or a price on is easy, it's action oriented, you get excited by all of that. जो असल काम है जिसके ऊपर अभी बाकी सब भी बात कर चुके हैं, is defining मसला है क्या, need क्या है, why do I exist, what problem am I solving, and that is painful. It's not fun. It means talking to people who have ideas very different from yours. It's a very laborious process, and I think that is what every startup needs to focus on rather than the solution. Solutions हम सब ने inspirational देखे हुए हैं. हम सब ने एक माइकल जॉर्डन का नाइकी का ad देखा होगा when we were 12 years old and said, I want to do something like that, right? And then the problem is you get on to making a chai khana and then you want to make the Nike wala Michael Jordan ad. Those two things will not make sense, right? So we all have things we love and want to do, and हम वो थोपना चाह रहे होते हैं onto a problem that we haven't really understood. So I think that's the first part. So that's the objective, right? Really getting core down to what your objective is. Number two is the goal. I think I'm sure a lot of people attending are cricket fans, right? Now I grew up at a generation जब इमरान खान cricket खेलते थे, वसीम अकरम, वका यूनुस, and you at times saw such a beautiful delivery. It just swings in, perfect line, perfect length. Batsman khel nahi paya. You didn't get the wicket, but it was a beautiful delivery, right? That doesn't count for anything. It doesn't really matter, right? So what is that goal? What is that picture of success that you really need to know, right? So the goal is, agar hum football ki analogy lein, there is a net and the ball has to go into it. If you did a lot of fancy things but didn't get the ball into the net, you didn't score. So you need to know what is the picture of success. So a lot of time aapka objective external hoga, but what does it mean internally? What is that goal? You need to know what that is. What are you chasing, right? Is it a certain revenue target? Is it a market share target? Is it some other KPI? But it needs to be very measurable, and you need to know कि ये मैं कर रहा हूँ. फिर goal with time evolve होता रहेगा. उसके बाद आ जाती है strategy. I think strategy then becomes a little bit simpler. Right? Strategy becomes कि अच्छा आपको direction भी पता है, आपको ये भी पता है क्यों करना है, कैसे करना है becomes your strategy. So you could go to Islamabad from Lahore through GT Road. You could go through motorway. They will all have their pros and cons. One might be expensive, one might be cheaper, one might take longer, the other will be shorter. किसी में traffic ज़्यादा होगा, कम होगा. You put all of that together, and everyone else has touched upon that as well, and that's where you get the strategy part to it. And I think what everyone's already spoken about, I think for a startup, the most important point is differentiation. There's one of my favorite authors, मैं उनको बड़ा ज़बरदस्त follow करता हूँ on podcast, on his articles, on his books, is Seth Godin. Seth Godin talks about the purple cow, right? अगर एक purple cow होगी ना, आप, I mean, गाय से ज़्यादा boring जानवर कोई नहीं हो सकता. मगर if you were to ever see a purple cow, you will stop, you will take a picture, you will put it on Instagram, and you're going to talk to 15 people about it. कि मैं जा रहा था और एक गाय थी, वो purple रंग की थी. You need to be that purple cow. Otherwise,
you are, as Kashif Saab was saying, why do you exist? Everyone else is already doing this. Aap bhi ek aur add in ho gaye in the list. Welcome aboard. You're another brand I don't care about. Great job. So you need to be differentiated in some way. And generally speaking, price is the easiest for the next guy with lower overheads to beat. So you haven't really done much if you're just cheaper. Being cheaper is a race to the bottom. Then everyone starts competing to get just cheaper. And then I think the last part is shipment. I think for a start is just ship, get the least viable product out there, and then keep iterating and making it a little bit better, right? So I'm sure Salman Saab, all the things that Chai Khana offers right now, they didn't have that 5-6 years ago. They started with chai, they did a brilliant job at it, and then they added other things to it that complemented that offering. But if he wanted to have the entire menu in day one with the perfection and the service that they deliver, वो अभी तक struggle कर रहे होते in doing that, right? So you start small and you keep building up to it. Right, interesting. Thank you for wrapping it up for us. So this is like the end of the first theme of our session today, which is like the strategic version of marketing. So अच्छा आपसे wrap up मैंने करवा लिया है. So पहले आप अपनी problem को अच्छे से define करें, and problem needs to be originated from your problem. जैसे सलमान की problem जो है, मेरी अपनी भी जो problem है, और काशिफ ने कहा है कि जब तक problem का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका passion नहीं आएगा. धोबी को ऑनलाइन ले जाना इज नॉट फन. हाँ, अगर खुद कपड़े धोते हो और धोने का शौक है तो फिर उसको ऑनलाइन जो है वो लेके जाओ. सो द प्रॉब्लम हैज टू बी कमिंग फ्रॉम योर पैशन. गोल सेट करना बड़ा जरूरी है. बेबी गोल सेट करना बड़ा जरूरी है. पहले मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, सो दैट यू कैन हैव द डायरेक्शन. और डायरेक्शन में आपने कहा कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और वो स्ट्रैटेजी में आप फिर ये पर्पल काउ फिनोमिनन जो है उसको आप लेकर आए और देखें कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और अगर पैशन होगा तो शायद आप डिफरेंशिएट जो है कर सकेंगे. और फाइनल में उसकी शिपमेंट है, जिसमें अगेन यू योरसेल्फ ब्रॉट इन दैट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. तो कोई प्रोडक्ट भी फुल नहीं होता. मुझे बड़े अच्छे से याद है, और अगर कभी हम बहुत सक्सेसफुल कंपनी बन गए तो मैं लिख दूंगी कि मेरी सारी टीम ने मुझे मना किया कि डॉक्टर फरा वायर फ्रेम मार्केट में मत लेके जाए. So, जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, दे अंडरस्टैंड कि वायर फ्रेम क्या होता है. वो बैक एंड वालों ने बनाया होता है, उसके ऊपर कोई UI UX नहीं हुआ होता, और वो अगलीस्ट होता है. एंड आई सेड जस्ट शट अप, आई हैव टू गो आउट, आई हैव टू चेक द माय कंज्यूमर. और बहुत कुछ उस वायर फ्रेम के ऊपर हम लेकर आए जो कि एक्चुअली कंज्यूमर ने हमें बताया. सो दैट वाज लाइक दिस इज द साइंस ऑफ MVP. तो शिपमेंट में आपने बहुत वेट नहीं करना होता. आपने जल्दी जल्दी जो है तो आप क्विकली फास्ट, वो कहते हैं ना, फास्ट फेलियर मोड में आप चले जाएं, विच इज ग्रेट, ताकि आप पिवट कर सकें. नाउ ये तो हो गई अब हमारी एक स्ट्रेटेजिक विंडो हमने सेट कर दी है, जिसमें हमने 4-5 मोटे मोटे लफ्ज हैं जो मार्केटिंग के अब आते रहेंगे, बड़े अब्यूज्ड है, बट आई हैव टू ब्रिंग देम इन. और वो ये है कि एक आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, और वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो कंज्यूमर इनसाइट से आएगी, और उसके बाद आपकी एक पोजिशनिंग है. लेट्स से कोई पर्पल काउ की अगर आपने कोई पोजिशनिंग अपने ढूंढ ली है, वेरी गुड, वो आप लेकर आए. लेकिन अब इस पोजिशनिंग को आपने लेके जाना है लोगों तक, which means tactics के ऊपर. So now I'm jumping towards tactics, and my question is to Aisha. So Aisha, startup जो है, they don't have money, right? As we have been talking about. Now digital marketing seems the cheapest way to communicate about your purple cow, if you have any concept like that. So tell us that what should be done with regard to digital marketing. पैसे मेरे पास है नहीं, traditional marketing में मैं जा नहीं सकती हूँ. And so any tips from your side that, guys, if you are a startup, then when you move towards digital marketing, then these are the steps that you should be very careful with. Over to Aisha. So it's a great question, and obviously coming from a large brand like Nike, it's a bit of a different perspective. But I think one thing that holds true, no matter what sector or segment of the market you're representing,
is obsessing the connected consumer journey and the experience that is clear and leads to a destination where your entire ecosystem can land up with. I think it's important to obsess every detail about the communication that your consumer is receiving, has a clear call to action, so a next step attached to it, as well as a clear takeaway that they can gain or benefit from. So for me, it's obsessing the connected journey. So every touch point should have a reason for being and should have a clear destination in mind. And then I think the other big major pieces are then a call to action. So every piece of content or every step along the journey, I think should have a very clear next step attached to it, as well as a consumer takeaway. So to me, those are important steps that we think about all day long in terms of working back with our digital teams. Is like, what does every moment along that journey look like? What is the consumer going to see? And then what comes after that? Again, I talk about innovation being our products, inspiration being the brand and the stories and the narratives that we can empower, and then enablement is really the action that we want our consumers to take. So I think that is probably the key. But I would love to hear what the other panelists have to say about digital strategy from a startup perspective. But to me, I think it definitely in this day and age, when there's so much noise, there's so much online advertising, there's so many distractions that can take people away from that journey, that it is, I think, of utmost importance to just obsess what that connected ecosystem looks like, and then what are the drivers around that ecosystem that bring your customer back in. Oops, I think you're on mute. Thank you. So I really love this point because ये मैं सवाल अपने से भी पूछती हूँ जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे आतिफ ने कहा वो अपने दिमाग के अंदर कुछ है, काशी ने कहा वो जो अपने दिमाग के अंदर है वो ले गए. So but why it is here? तो रीजन क्या है? तो कोई भी अगर आप कंटेंट डेवलप करते हैं, किसी किस्म का कोई एड बनाते हैं और उसको आप डिजिटल मीडियम में रखते हैं, और अब हम बाकी भी पैनलिस्ट से बात करेंगे, इसी को अब हम अगले 10 मिनट्स उस पर फोकस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि हाउ शुड वी बी डूइंग इट. सो उसका रीजन बहुत जरूरी है, क्यों है वहां पे, और इट्स नॉट जस्ट कि क्यों है यहाँ पे, उसके साथ एक कॉल टू एक्शन लगाए. एंड आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू विद दिस कि ये दो चीजें मुझे बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए. आई एम नाउ गोइंग टू सलमान. Salman, kindly आप हमें बताएं, and you have fantastic journey as a startup, कि अब मैं इस पर मेरा फोकस आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, और फिर साइड और आप फील फ्री कि आप उस पर भी कमेंट करें कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के साथ मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कंबाइन कर सकती हूँ. तो ये दोनों चीजें अब हम अगले 10 मिनट बात करेंगे. सो अब आपके ख्याल में बीइंग अ स्टार्टअप, how should I use this digital marketing? Over to you, Salman. जी, I think it's a great question, and जो हर एडवर्टाइजर के जो भी है, चाहे वो स्टार्टअप में हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट में काम करो, it's a question, and I find it very interesting and also funny when Aisha said that digital is so cluttered now, and it's very important to see what you're doing. And when in my days when I was in the telecoms, and this is early 2000s, and we were talking about how traditional is so cluttered and we need to move to digital. So life goes on and we keep moving from channel to channel and space to space. But coming back to the question, I think there are, you cannot say that traditional is out. I'm a great believer in non-traditional advertising now, which I don't think TV gets you what digital can get you, and I don't think print can get you. But what they give you today is they give you credibility, especially in Pakistan's context. I'm not talking about global, maybe it may be different. But from a Pakistani perspective, when a small startup, whatever it may be, we have seen Airlift and we have seen some other companies, when they have billboards or when they do a print ad or when they have a mainstream TV ad, it gives credibility to the audience and to the channel that this is a big company.
and because people know that when you do traditional marketing or advertising you need a lot of money, so at the back of the mind लोगों के ये फिर जहन में आ जाता है कि ये कोई बड़ी कंपनी है जो जिससे क्रेडिबिलिटी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो नुकसान है ट्रेडिशनल के, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आप एक स्टार्टअप हैं, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी आप सिर्फ इस्लामाबाद में या कराची में आप मार्केट कर रहे हैं, आप उसको टीवी पे तो लेके नहीं जा सकते बिकॉज टीवी नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चीचू की मलिया में भी नजर आएगा और वो आपको कराची लाहौर में भी नजर आएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज, इट्स एक्सपेंसिव एंड अ लॉट ऑफ वेस्टेज। न्यूज़पेपर में भी प्रीटी मच यही प्रॉब्लम है, प्लस न्यूज़पेपर का पाकिस्तान में दूसरा प्रॉब्लम ये है कि द रीडरशिप इज सो लो दैट यू कांट इवन, ऑल द नंबर्स आर फेक, सब गलत नंबर्स चल रहे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग आपका। द अदर थिंग इज, किसी बड़े बड़े आदमी ने कहा था कि द प्रॉब्लम विद माय एडवर्टाइजिंग इज 50% इज वेस्टेड, आई डोंट नो व्हिच 50%। सो डिजिटल का फायदा जो है वो सबसे बड़ा ये है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ये किस तक जा रहा है, किसको नजर आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, किसको मैं दिखाना चाहता हूँ। आई कैन हैव मल्टीपल मैसेजेस फॉर मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स। तो जो पुरानी सेगमेंटेशन की थ्योरीज थी मार्केटिंग की, वो इसीलिए बनी थी क्योंकि कॉस्ट ऑफ रीचिंग अ सेगमेंट वो बहुत ज्यादा थी थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया। नाउ कॉस्ट ऑफ रीचिंग अ सेगमेंट इज फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी। So what is stopping you to have 1 million segments in your, I'm just exaggerating, but what's stopping you from having very very small segments? और हर segment के लिए आप एक different communication बना सकते हैं। तो digital आपको ये opportunity provide करता है micro segmentation की। फिर आपको वो टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, जो मैं पहले भी बता रहा था, और एक क्वेश्चन में देख रहा था किसी ने पूछा कि ए/बी टेस्टिंग क्या होती है। तो यू शुड, आप एक मैसेज किसी एक सेगमेंट को देंगे, उसको ए टारगेट कर दें, और किसी को बी मैसेज देंगे, और देखें कि दोनों का रिएक्शन क्या है, लाइक्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, व्हाटएवर जो ट्रेडिशनल मीडिया में है, डिजिटल मीडिया में होता है। और आपको अंदाजा होता जाएगा कि आपके कौन से मैसेजेस जो हैं वो, उनका क्या रिएक्शन है कंज्यूमर का, और उसको लेकर आप आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है डिजिटल आपको जो आजकल की कंज्यूमर, आजकल का जो कंज्यूमर है वो, दे आर नॉट विलिंग टू लुक एट द टीवी एड ओनली एंड बाय योर प्रोडक्ट। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो जमाना अब चला गया है। दे वांट टू एंगेज विद योर प्रोडक्ट, दे वांट टू टॉक टू यू। सो जो फाइनल लाइंस थी एक कंपनी की कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मेरे ख्याल में बड़ी ब्लर हो गई हैं। कंज्यूमर आर टॉकिंग टू एनीवन ऑन द इंटरनेट, ऑन द मोबाइल एप्स और व्हाटएवर। सो आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ और ये सारी चीजें जो अब पहले बहुत मुश्किल थी, डिजिटल आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आई थिंक द वैल्यू फॉर योर बक in digital is much higher than in traditional. ठीक ठीक। सो ओवर टू काशिफ। सो काशिफ, फिर मैं और हमारे एक सेशन जो इसके बाद जो सेशन रखा हुआ है एनआईसी ने, दैट विल बी फोकसिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। तो वो एक अलग सेशन भी है। लेकिन हम इस वक्त एज अ स्टार्टअप, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि पैसे मेरे पास नहीं है और मुझे कम्युनिकेट भी करना है, तो किस तरह से मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं? मैंने ये एग्जीक्यूट करना है ना अपनी स्ट्रैटेजी को, मेरी टैक्टिक्स हैं। तो कुछ टिप्स काशिफ आपकी तरफ से, ताकि कम पैसों में एक अच्छी एंगेजमेंट आ जाए। और बाय द वे, एज अ स्टार्टअप मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए। सो बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ डॉलर अमाउंट। तो वो जो हम बनाते थे ना कॉर्पोरेट में कि वो हर चीज का आरओआई कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे भी आरओआई चाहिए, और बल्कि यहाँ तो पैसे वैसे ही बड़े कम है, तो इसे बहुत अच्छा आरओआई चाहिए। इससे पहले कि मैं स्टार्टअप की बात करूं, थोड़ा सा आपको डिजिटल का पावर की मैं जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया आपको बताता हूं कि 2003-4 में मैंने 2 गाने बनाए थे सुप्रीम इश्क के नाम से। वर्लिंग दरवेशिस था और एक अनारकली था, और वो सुप्रीम के ब्रांड के साथ था। तो उस वक्त जो मुझे पैसे उसको बनाने में लगे थे, उससे तकरीबन 3 से 4 गुना मुझे लगे थे उसको पब्लिसाइज करने में, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया पे चलाने पे और उसकी पब्लिसिटी करने पे। अभी मैंने हालिया वुमेन्स डे पे दुआए रीम में एक गाना बनाया अगेन शोएब मंसूर साहब के साथ, जो मेरी कॉस्ट थी प्रोडक्शन की, उससे 1/3 में मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं पहले 3 गुना खर्च करके करता था। तो जो पावर है, और मुझे ट्रेडिशनल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ डिजिटल ने मेरा वो काम कर दिया। और वो मजे की बात इंटरेस्टिंगली ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया ने उसको कैरी किया एज ए न्यूज आइटम कि ये चीज आ गई है, बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू। So digital has certainly changed the rules of the game, because now if your content is creative, is differentiated, it will get picked up. I mean, it has to be something
which sets you apart, और वो चीज हो जाएगी. इसी कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल पे आ जाते हैं, स्टार्टअप्स पे आ जाते हैं. अगेन जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनक्यूबेटर्स के साथ और स्टार्टअप्स के साथ रहा है रिगार्डिंग देयर डिजिटल एक्सपीरियंस, एक तो सैडली लोग पढ़ते नहीं हैं आजकल. प्रोफेसर गूगल मौजूद है, 50 आपको चीजें मिल जाती हैं अगर आप टाइप करें कि भाई किस तरह क्या कर सकते हैं. But there's one book that I would recommend all startups, and I've done it to a lot of startups, कि जब वो अपनी वेबसाइट या अपनी कोई भी डिजिटल मैसेजिंग कर रहे हो, it's a book called Building a Story Brand by Donald Miller. Now, this is something that I've recommended to a lot of startups, and they have actually told me, one of them told me कि मेरा business 25% बढ़ गया, online business. तो क्योंकि वो क्या करता है कि उसने किताब में प्रेमिस ये रखी है कि जितने ये कैरेक्टर्स हैं ना, सुपर हीरोज आपके मार्वल के ऑल, ये स्टिकी क्यों होती हैं स्टोरीज, यू नो व्हाट्स द स्टिकीनेस कमिंग फ्रॉम. और उसने आपकी ब्रांड स्टोरी को उस तरह उसी लेट्स से फॉर्मेट में आपको फोर्स करता है कि आप वो स्टोरी बनाएं. सो आई फाइंड इट एक्सट्रीमली यूजफुल एंड आई थिंक स्टार्टअप शुड रीड दैट. आई एग्री विद आतिफ, एक साइड लाइन के वो जो स्ट्रेटजी का लफ्ज है, मेरे लिए वो बॉटम अप मार्केटिंग है, जो एलराइस कहता था कि टैक्टिक्स were actually mental comparative angles and strategy was actually a coherent marketing direction. So it wasn't ever top down. Strategy has to flow from your experiences, you know, in the market. तो digital startups के लिए तो lifeline है obviously. आपके पास सोशल मीडिया से आप जनरली शुरू करते हैं, ई कॉमर्स से भी नहीं करते. बहुत सारे जो आंटियों के केक पेस्ट्री के बिजनेसेस थे वो इसी तरह फ्लो कर रहे हैं. आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज जस्ट स्टार्टेड अ फूड ब्रांड, और वो सिर्फ फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू उसको प्रमोट कर रहे हैं. तो ये तो लाइफ लाइन है, बट उसमें भी इतना जो हम बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा हो गई है कि हाउ डू यू सेट अपार्ट. तो वहां मेरा ख्याल है कुछ एक साइंस का एलिमेंट है बिसाइड्स द आर्ट, needs to be understood, which is easily accessible now. I mean, these webinars and these forums are fine, but today in this day and age, there is absolutely no excuse for any startup not to know what to do. You have Professor Google at your fingertips, you know, rather than spending time watching Netflix. Research as to what, you know, global brands have done, what local brands are doing. In fact, अपनी जो कैटेगरी जिसमें आप स्टार्टअप हैं उसका तो कम से कम पता होना चाहिए कि 100 डिफरेंट कंपनियां उस स्पेस में क्या कर रही हैं. And you know, it's at times heartbreaking when you ask startups this and they don't know कि उनकी अपनी स्पेस में क्या हो. I think there's no substitute for hard work, especially for a startup like you said जिसके पास पैसे नहीं है. So what do? I mean, you've got to research. You've got to research and then find the mental angle which will set you apart. And then from there, you build a complete marketing direction. And it's doable very easily. Like I told you, एक किताब जो है, ये अगर आपको 25% revenue boost दे देता है, तो it's worth investing in. Online जाएं, पढ़ें, you know. अपने ऊपर आप वो किताब का नाम दोबारा बताते हैं. करीम, आप वो कमेंट्स में लिखते हैं किताब का नाम, because we have like viewers, they are asking about. It's called Building a Story Brand. It's by an author called Donald Miller. I think मैंने बहुत सारी किताबें मार्केटिंग की आपने भी पढ़ी हैं, आप तो प्रोफेसर हैं. मुझे इससे बेहतर स्टार्टअप्स के लिए सिंप्लीफाई करके ब्रांडिंग मैसेज को किस तरह सिंपल कलोकियल किया जाए, कंज्यूमर लैंग्वेज में किया जाए, मुझे नहीं मिली. और जब मैंने कुछ स्टार्टअप्स को दिया और उनको फायदा हुआ तो फिर आई वाज श्योर कि इट्स समथिंग दैट मोस्ट स्टार्टअप्स शुड रीड. So again, the same question आतिफ आपके लिए भी है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, जैसे काशिफ भी कह रहे हैं, उसको लोकलाइज किस तरह से करके अपनी स्टोरी बना सकते हैं. ओवर टू यू आतिफ. So, you know, on the topic, a lot of people have already given some very valuable inputs. मेरे ख्याल से the one thing I would look at is, again, you don't have to have a brilliant mix of traditional and digital and conventional and all of that. बहुत सारी marketing presentations में जब 360 एक पूरा ना हो, बीच में consumer होता है, और फिर हम सारे मीडियम जब तक ना लगा दें तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कसर रह गई है. So I don't think that's how you necessarily need to do it. किसी ने डिग्री के बारे में कहा था, मगर मार्केटिंग होती है, असली है कि नकली है, doesn't really matter. So what you need to do is, I believe in the world of publishing, there is a rule
मुझे याद नहीं आ रहा who the author of that is. It's called Essence उसका ये there are in the US about 100 million readers of books and there's about 10 million avid readers. For a book to become successful, you need to get the first 10,000. Now, in the first 10,000 is all of your marketing effort. After that, it's all about the product. If the first 10,000 thought your book was bad, it's not going to go any further, right? Salman Saab se meri aaj pehli dafa mulaqat ho rahi hai, but Salman Saab about 7 years ago made a promise to me. A friend of mine, he didn't even know me, a friend of mine told me कि हम इस्लामाबाद जा रहे थे, हम अगले दिन breakfast करेंगे चाय खाना पे, and they have fantastic French toast. Now this was a promise that Salman Sir had made to me without ever knowing me, through word of mouth. अगर उस दिन मैं इनके French toast खाता और मुझे पसंद ना आते, the promise was broken. I was never coming back to him. It didn't matter how much he advertised. It didn't matter how beautiful his logo was. It didn't matter how great his tagline was, which, by the way, I think is fantastic. First time I heard about it. Coffee is not my cup of tea. But it wouldn't matter if the pancakes didn't deliver on the promise that he had made. So I think it's quite simple. आपने अपने target audience तक message पहुंचाना है, and your product better live up to the promise that you've made. It's quite simple. Now, does digital do the job for you? Go for it. If you're a mass appeal product, you will have to advertise on PTV. Pakistan के context में that is still a reality. अगर आप एक high end investment bank हैं, तो probably print करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, etc. 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 So I think the world is evolving to a great blur of and you know, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, the new thing comes in and that is clutter free and everyone wants to move towards it, and then that becomes cluttered as well. That will continue to happen. आपको ये देखना है कि यार आपके वो 10,000 रीडर्स कौन हैं, उनको मैं कैसे एक्सेस करूंगा. आपने उन 10,000 तक पहुंचाना है, and then your product has to deliver. You don't have to go mass every time. You don't have to go to every Tom, Dick and Harry. आपको बड़ा focused approach हो, उसके लिए आपके पास correct media plan हो. अगर आप एक startup हैं, तो you will need to be as affordable and with very precision ROI के साथ आपको जाना पड़ेगा. And then the product has to deliver, and the word of mouth after that has to live up to the promise. Great. Thank you for giving me the lead towards my next question. So we have talked about कि digital space को आप कैसे optimize कर सकते हैं to some extent, and it's very much linked to the strategy. आज हमारे session के बाद जो एक session है वो तो purely digital marketing में, I hope our viewers will learn a lot from there as well. But the product is the promise. Your message was not the promise. Message was just a lead towards the promise. So I have like literally 4 experts sitting over here. So how will I make it sure in terms of my product as the promise? मुझे as a startup मुझे tip चाहिए. मुझे ये पता है कि as a startup मेरा एक passion था. उस passion पे जितनी मेरी समझ बूझ थी, जो मेरे पास resources थे, उसके हिसाब से मैंने एक product बना दी है या service design कर दी है, और अब मैं वो market में ले गई हूँ. अब मुझे उसको sustain कराना है या मुझे उसको innovate कराना है. So now from the 4 panelists, I would like to understand कि मैं उसको sustain कैसे कराऊं, और दूसरा जो मुझे किसी ने सिखा दिया हमारे किसी boot camp में कि भाई constantly आपने innovate करना है, तो अब तो sustain और innovate मैं कैसे करूंगी, और उसके साथ मुझे मेरे customer को engage रखना है. So it's not an easy question, I understand, but this is the question from the starter perspective. So over to Salman. जी सलमान, आपको मैंने थ्रो कर दी है पहली बॉल खेलने के लिए. सॉरी जी वो आपका कैमरा ऑफ हो गया सलमान, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट. मुश्किल पूछ लिया असल में. I am back. अच्छा, so if I understand the question correctly, I think बाज़ दफ़ा जो है ना हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि innovation for the sake of innovation.
एंड वी हैव टू डू समथिंग। होता ये है कि हम बड़ी जल्दी मार्केटियर्स जो है ना वो अपने ब्रांड से बोर हो जाते हैं कि यार ये मैं पिछले 6 महीने से एक ही चीज कर रहा हूँ, और ये बिलीव मी, एंड कोक एंड पेप्सी एंड नाइकी विल टेल यू दैट दे हैव लिव्ड फॉर द सेम पोजिशनिंग एंड टैगलाइंस फॉर डेकेड्स। ठीक है, so consumers don't get bored. Consumers will get bored of you if your problem or if your product is not delivering. जो भी सबने बात की यहाँ पे कि आपका प्रोडक्ट जो आपकी प्रॉमिस थी। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जो टू गेट द फर्स्ट पार्ट राइट। मैंने कहीं पढ़ा था, सभी अच्छी अच्छी किताबों के नाम ले रहे हैं तो मैं भी एक नाम ले दूं। एक बंदा है, उसका नाम है डेविड ब्रायर, DAVID BRIER। I find his approach to marketing and advertising brilliant, in your face, and what is needed in this world to break this बकवास जो हम सारे मिलके एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। So I think उसमें the key thing is कि बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स बने हैं दुनिया में, आप नेटफ्लिक्स ले लें। नेटफ्लिक्स कैसे बना? नेटफ्लिक्स का जो ओनर था, he hated getting out of the sofa, going out to a rental shop and getting a movie। ठीक है, उबर क्यों बनी? The guy hated the current state of taxis and not being able to pay through credit card। और मैं और कौन सा ब्रांड बताऊं? जो सब बड़े ब्रांड्स बनने की प्रोबेबिलिटी जब बनती है जब आप किसी करंट सिचुएशन को हेट करते हैं। एयरबीएनबी इसलिए बना कि आपके पास चॉइसेस नहीं थी और बेकार कमरे, आप कमरे देख नहीं सकते थे, आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते थे। सो ऑल दीज ब्रांड्स हेटेड समथिंग एंड दे क्रिएटेड समथिंग in reverse of that hatred। So I think what I want to say, my message is कि rather than keep innovating continuously, and innovation कोई बुरी चीज नहीं है if it is coming from सबने अभी कहा कि consumer insights लॉन्च के दिन नहीं होती, consumer insights every day होती हैं, हर रोज आ रही होती हैं। You just need to listen to them, you just need to make a mechanism जहाँ आप कंज्यूमर की बातें सुन सकें, उसके दिल की बात समझ सकें। So आपको वहीं से आइडिया आएंगे, आपके प्रोडक्ट में चेंजेस जो होनी है वो वहीं से होंगी। आपकी तरफ से कोई चेंजेस, यू कांट इमेजिन अ प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो my thing on innovation is that it always and mostly comes from the consumers। You have to get your hands dirty, you have to be on the bike if it's a consumer product, you have to be on a retailer की दुकान पे, you have to really get into the thick of things। So CEOs जो हैं स्टार्टअप्स के जनरली आमतौर पे वो अपने प्रोडक्ट में इतने खोए हुए होते हैं एंड दे थिंक कि उनको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। दे थिंक कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है मेरा कि लोग तो आएंगे, दे विल कम। लेकिन ऐसे होता नहीं है, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों से सीखना पड़ता है। इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन कम्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक। ओवर टू काशिफ, द सेम क्वेश्चन जी। मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस तरह दूं कि जो भी बात सलमान कर रहे थे कि कंज्यूमर बोर होता है, वो इनकंसिस्टेंसी से बोर होता है जब आप उसको कंसिस्टेंट चीजें नहीं देते। और मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस फूड ब्रांड्स के साथ रहा है। एक बारबेक्यू नाइट नाम का एक रेस्टोरेंट है कराची में जो लाहौर में भी है। उसका एक जनरल रूल है, आप आधा खाया हुआ भी उसको खा के बुला के कहें ना ये अच्छा नहीं पका, वो आपसे सवाल नहीं करता, वो ले जाएगा दूसरी डिश ले आएगा। कोलाची डज द सेम। इवन टेक अवे में मेरे साथ ही हो चुका है। आतिफ ने बात की कि प्रोडक्ट हैज टू डिलीवर। आप लेस को ले लें वर्सेस ओए होए वर्सेस नॉकआउट, आई मीन कितने आए और कितना स्पेंड किया, पैसे खर्च किए, लेकिन लेस को नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो लेस कर रहा है। तो ये सब चीजें एटलीस्ट फूड ब्रांड्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि जो मुंह को एक दफा जायका लग जाए वो हमेशा लगा रहे। तो सस्टेन इस तरह भी करना है कि रिपीटेडली वही एक्सपीरियंस देना है ताकि आदत पड़े उस चीज की, एंड यू कम टू एक्सपेक्ट इट। दैट्स व्हाट द ब्रांड प्रॉमिसेस। द अदर थिंग व्हिच आई थिंक फॉर अ स्टार्टअप, स्पेशली आजकल जो ये कोविड हुआ है, अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप एक प्लान, और एक अभी मैं एक स्टार्टअप के साथ कर रहा था, आप ही का जो टेक वर्क्स का है सिलसिला, तो उसने एक आइडिया सोचा था, मैं उसके साथ जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था नेक्स्ट स्टेप, तो ही हैड गिवन अप। ही सेड कि जी जब तक ये कोविड की सिचुएशन नहीं खत्म होगी ये तो चल ही नहीं सकता। तो वो एक फ्रेम ऑफ माइंड में चला गया कि बगैर हालात नॉर्मल हुए, एंड आई वाज सर्टनली, आई डिडंट वांट टू टेक द एयर आउट ऑफ हिज टायर्स। आई जस्ट टोल्ड हिम कि लुक, अगर ये नहीं
खत्म होता, ये एक्सटेंडेड होता है, तो फिर क्या प्लान है? You know, can we do this? Can we? मैं उसको थोड़ा नच कर रहा था इधर उधर, but then when I realized कि नहीं, he was so fixated on कि यही है और जब तक ये नहीं है तो कुछ. So I think adaptability in the current situation also is very important for a startup. कि अगर आपने एक प्लान बनाया है और हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल जाता है, do you have enough in you and your business model to be able to take it as an opportunity rather than give up? See कि अच्छा है, मैं किस तरह इसको, maybe it's not going to be like this, but maybe if I tweak it, this is where I'm going to really fly. So I think that capability has to be developed within the startup. Unfortunately, as you correctly said, there's so much to do at the stage of startup कि आप ये सब कुछ खुद नहीं कर सकते. Which is where I think you need help. So you have NICs, you have edtech's work, you have, you know, forums which can guide you, which can help you, which can navigate you towards a solution when you're stuck somewhere. But at the end of the day, if you have it in you as the entrepreneur, to be able to adapt and move on and innovate when required, be consistent when required, then you can pretty much carry your brand in the long haul. ठीक. जी आयशा, your take. Yeah, thank you. And also my apologies as I realized it would be better in Urdu. But I was saying earlier that I'm going to stick with English for now. So definitely hit me on the side if you have any questions, and I can type my response. But when it comes to innovation, I think I view it in two ways. The first is incremental and like those small adjustments that you can make along the way. And it's been a huge focus of ours over the years. As you know, sneaker innovation continues on an incremental path. I also think that there's a huge amount of effort and investment in disruptive innovation, long-term innovation. And that is a massive focus of ours. So you can think about the Nike Run Club app, the Nike Training app. They're all services that we have switched to, realizing that we also need to support how people are working out, how they're going to the gym, how they're able to do that in home. We've started doing live workouts. So I think there's a whole host of services. And to me, that's not quite disruptive. It maybe was at one point in time. But we also have an organization called Valiant Labs that's looking far out into the future and coming up with new product market fit that is completely out of the box of what we would traditionally do, because we realize that consumers move very quickly. The fitness and style and luxury industry moves very quickly. So how do we fine tune and adjust and look towards the future? And there's tons of methodologies that we can use to do that, whether it's speculative design, world building, trying to paint a vision of the future that then we can design for today. So I think there's different levels of innovation. I think it's needed across the board. Once you have defined and developed your core product, I think there always needs to be a constant level of renewal and refreshment, whether that's through the lens of sustainability, functionality, new markets. But then there also needs to be a vision towards the midterm and then long-term complete disruption in a world where your product no longer exists. True. I'm not sure if I answered your question, but actually you have helped me in bringing some terminologies which I was thinking about. So now I don't need to say this. You have said it. That's brilliant. And so बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की. आपने बात की इंक्रीमेंटल इनोवेशन की. जस्ट टू नो हमारे ताकि व्यूअर्स को जरा समझ में भी आ जाए जिन्होंने इनोवेशन का लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ. इंक्रीमेंटल इनोवेशन में, और आतिफ की भी अब साथ बात करूंगी. सो फॉर एग्जांपल आपने लेस का एक पैकेट डिजाइन कर दिया और उसके अंदर आपने 2-3 फ्लेवर्स कर दिए. इंक्रीमेंटल इनोवेशन वुड बी कि आपने 2 और फ्लेवर ऐड कर दिए. So this is not like disruptive innovation, right? आपने उसी के अंदर रह के इनोवेशन दिखाई और 2 और फ्लेवर ले आए, उसके रंग बदल दिए. फिर उसमें एक ये भी इनोवेशन है कि कुछ अर्सा के लिए वो पास अ स्माइल वाली कैंपेन चला दी
और वो जो पैकेजिंग थी उसके अंदर इनोवेशन ले आए। तो बजाय कि आपने सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई, आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए। एंड दीज ऑल आर द इंक्रीमेंटल इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन वुड बी लाइक ऑल टुगेदर, जैसे आप आयशा कह रही हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। सो स्टार्टअप के लिए जो काशिफ बात कर रहे हैं, जो सलमान बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप शायद हो सकता है कि एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन ही लेकर आया टू बिगिन विद। वो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स, यू नो, उस इंडस्ट्री में कोई है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये बात हो रही है, कल मेरी एक पैनल के साथ बात हो रही थी, हम नेशनल लेवल की एजुकेशन स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे थे, और उन शख्स ने कहा कि मुझे लगता ये है कि मुझे मेरे बेटे की होम स्कूलिंग शुरू करा देनी चाहिए। So people have started thinking about it. Why should they be sending their kids to the schools in any case? अगर कोई अच्छा होम स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म आ जाए तो एन मुमकिन है कि बहुत से पेरेंट्स कहेंगे भाई स्कूल फारिग करें, होम स्कूलिंग के अंदर चलते हैं। हाउएवर बच्चे को सिर्फ बच्चा तो वैसे पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तो माँ बाप जबरदस्ती उसको पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ने के अलावा उसको बहुत कुछ चाहिए। तो अगर वो प्लेटफॉर्म उसको वो और जो बहुत कुछ चाहिए वो प्रोवाइड कर दे, तो दैट विल बी परफेक्ट मार्केट फिट। So disruptive innovation भी आती है। तो before I jump to my other stream of work, और आतिफ से थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी, मेरी ये राय ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं जनरली अगर वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन लेकर आएंगे, काशी मुझसे एग्री करेंगे, तो वो मीटू बन जाएंगे। यानी कि धोबी को ऑनलाइन ले गए, ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन, धोबी को ऑनलाइन ले गए। लेकिन अगर वो कोई पैशन है उनका और कोई एक्सप्लोर वो कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रप्टिव आइडिया पे वो काम कर रहे हैं, तो उनका डिस्ट्रप्टिव आइडिया माइट बी पिक्ड अप बाय अ कंपनी लाइक Pepsi, a company like Nike, and we have seen it. Google has taken so many tech startups, you know, on board, और of course उसको टाइम लगता है, बट हो जाता है। तो ये ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आपने इंक्रीमेंटल इनोवेशन भी करनी होती है, लेकिन कभी कभी आपका आइडिया पर से बहुत डिस्ट्रप्टिव होता है। सो यू गो अहेड विद दैट, और लेकिन फिर आपको ज्वाइन इन हैंड्स करने होंगे एक सर्टेन हद के बाद। सो बट प्रोडक्ट प्रॉमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये सब की एक जो सिंगल अगर मैं उसकी बात करूं मैसेज की, तो प्रोडक्ट प्रॉमिस एंड लव फॉर दिस प्रोडक्ट प्रॉमिस, उसका पैशन बहुत जरूरी है। आतिफ, वुड यू लाइक टू एनी अदर कमेंट इन द प्रोडक्ट कैटेगरी? बिकॉज उसके साथ ही मैं अपना अगला सवाल आतिफ आप ही को पोजीशन कर देती हूँ। So pricing is always a very wicked, one of the P's. Pricing set नहीं होती, समझ नहीं आता किधर pricing करना है। तो ये product पे आप comment दे दें, उसके बाद I would like to have your insight about pricing. जी, over to Atif. Sure. So देखिए, product के ऊपर a lot has already been covered. I would just say a couple of things. Differentiation is something जिसके ऊपर बड़ा focus होता है. A lot of people will talk about it. I spoke about it. Everyone else did on the panel as well. But उसकी flip side is relevance, right? Difference create करते करते आप इतने different ना हो जाएं कि आप relevant ही ना रहें, right? So for instance, अगर मैं आपको पाकिस्तान की जूस मार्केट के बारे में, I don't know much about it, but जो top line मुझे understanding है, packaged juice में 80% of what flavor sells is a mango, roughly. Yeah. Now, imagine if you were coming into this category as a new player. आप अगर मैंगो में आते हैं तो आप मीटू की लाइन में लग जाइए, 600 पहले से हैं, आप भी आ गए। मगर अगर आपने बड़ी कोई जबरदस्त डिफरेंशिएशन की और गोजी बेरी जूस ले आए पाकिस्तान में, तो उस 20% के भी एक माइन्यूट से एरिया में आप खेलते रहेंगे। एंड दैट्स द ट्रिकी पार्ट ऑफ इनोवेशन, राइट? डू यू गेट इनटू द लाइन वेयर यू गॉट a lot of relevance but many players, and how far do you disrupt? And that's the thing, right? So I won't, मेरे पास इसका आंसर नहीं होगा, शायद किसी के पास भी नहीं होगा, मगर ये बैलेंस है जो आपको क्रैक करना है कि कैटेगरी या कंज्यूमर की करंट नीड किधर है और अराउंड द कॉर्नर कहाँ तक आपको स्ट्रेच नजर आता है उसकी इमेजिनेशन में। आपने वो स्वीट स्पॉट क्रैक कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, सिमिलरली ऑन द टॉपिक, कुछ चीजें उस कैटेगरी, उस बिजनेस की कोर डीएनए का हिस्सा होती हैं, राइट? यू डोंट वांट टू इनोवेट विद देम। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप ऑटोमोबाइल को देखें, इन 100 years from what Ford started off with, what you have right now, it's a massive change, right? There is hardly anything
in common with the car that's out in the market right now and what was out there about 100 years ago. But steering wheel has stayed. It is round. It's what you turn. You don't need to innovate with that, right? That thing works. The steering wheel is a perfect solution. Don't put a joystick there. Do not put hand controlled, eye controlled, mind control. Don't mess with it. Keep the steering wheel. It works. Everyone gets it, right? And that's why no one has messed with it. किसी ने चौकोर steering wheel successfully नहीं किया. So that is core essence of what the automobile is about. Don't mess with that. And you know, and that's where the relevance really shakes up, right? So that's just that little rant on relevance and differentiation. On pricing, I think अगर पाकिस्तानी market की बात करें, दो बड़े distinct factors हैं. एक है value and एक है affordability, right? अगर मैं अपनी category की बात करूं, 10 रुपए में available होना is about affordability. Now 10 रुपए में आपको जरूरी नहीं है कि आप उतनी ही value दें जितने शायद आपका competition दे रहा हो. But अगर आप affordable नहीं हुए, it doesn't matter how much value you give in 20 rupees, 30 rupees, 50 rupees, because affordability is very important. So एक तो ये distinct factor है with every pricing strategy to remember कि affordability एक अलग बला है और value एक अलग बला है. And आपने इन दोनों को cater करना है for different consumer, for different need states, etc. The other factor is, which I touched upon a little bit earlier, which is, and I think Kashif साहब ने भी बात की थी इसके ऊपर, doing it faster, doing it cheaper. आप शायद as a startup cheaper कर सकें, क्योंकि आप थोड़े nimble हैं, आपके overheads कम हैं, आप that X% cheaper कर सकते हैं. But inshallah, if your business becomes successful, very soon there will be another startup knocking on your door who will do it a little bit cheaper than you. It's a race to the bottom, right? If your only differentiation is to be able to do something just as bad as the other person but cheaper, you will take yourself and the entire industry down into the gutters. So there's got to be something more that as a startup you bring value to it, which allows for people who are willing to pay that little bit extra. Otherwise, yes, a short-lived win आपकी जरूर होगी, मगर आप अपने आप को और अपने competitors को सबको एक vicious cycle में डाल रहे हैं by doing things just as good or just as bad, but just doing them a little bit cheaper. So you have to add that value that your consumer looks at and is willing to pay a little bit more for that. So if I go to Salman sir, so yeah, pricing. So what is your comment on pricing, Salman? Before commenting on pricing, I think एक छोटी सी चीज innovation पे रह गई थी. And for people who have not read Blue Ocean Strategy, I think it's a great book. It will make you understand innovation in the new world. It is being taught all over the world in all the Ivy League schools also. Just go and read it. It will tell you how to innovate in today's market. I won't go into details. You will enjoy the book. Coming back to pricing, in my corporate career, I'm giving you a secret out here. मेरा जो corporate career था telecom में गुजरा सारा, तकरीबन 24-25 साल. और IMB मतलब मेरा जो टाइटल समझे वहाँ पे वो है चीप प्राइसिंग का बादशाह. ठीक है, जो कि सस्ता लाओ बेचो. So I'm being blamed for जो टेलको में ब्लड बात है इस वक्त पाकिस्तान में, उसका आप समझे बादशाह मुझे कहा जाता है. Not a very honorable title, but so I have a huge learning from my telco days and also from Chai Khana and from other products that I launched. एक बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग है, अगर आप चीप करके बेचेंगे अपने आप को और स्टार्टअप हैं आप, एंड इफ दैट्स योर पोजीशनिंग, और आप जिस मार्केट में हैं वहाँ कोई बड़ा प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दे विल वाइप यू आउट. दे विल. सो मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल है, एक कंपनी मैंने लॉन्च की DVCom के नाम से. ये कॉलिंग कार्ड हम बेचते थे. तो जब लॉन्च हुई तो हमने आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, उस वक्त अमेरिका की कॉल जो थी वो 20 रुपए पर मिनट होती थी पाकिस्तान से. अच्छा, उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए थे
जिसकी वजह से अब अमेरिका की कॉस्ट जो थी कॉल की वो ₹2 हो गई थी। तो हमने सोचा यार जब ₹2 कॉस्ट है तो हम इसको ₹5 पे बेचते हैं, हम क्यों ना, कैपेसिटी थी हमारे पास रीजनेबल लेवल की। तो हमने अमेरिका की कॉल ₹5 में बिग टाइम कॉलिंग कार्ड 2005 में हमने लॉन्च किया। तो जितने बड़े प्लेयर्स थे वी वाइप्ड आउट देयर प्रॉफिट्स एंड देयर मार्जिन्स। As they say, rest is history. We were closed down in 2 years because we could not sustain the pressure from the big guys. We're doing some stuff जिसकी वजह से वो कॉस्ट से नीचे प्राइस ले आए, अपनी ₹2 से कम की अमेरिका की कॉल बेच दी क्योंकि वो इलीगल ट्रैफिक कर रहे थे साथ। So coming to the point, you have to be very careful about pricing. The flip side of the coin is you should not leave money on the table. ठीक है, तो if there is money to be made, so it's a very fine balance कि आप क्या प्राइस रखते हैं। एक और लर्निंग जो मेरी रही है स्मॉल बिजनेस में, वो ये है कि it's easy to launch with a lower price and increase prices, but it will be impossible to decrease prices if it is not selling. So if you want to have an error on the low price side, ठीक है, rather than कि high price करके फिर नीचे लाएं उसको। आई थिंक उसने आतिफ ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आप पहले उसकी पॉकेट में पहुंचे तो उसकी पॉकेट के काबिल तो बने, बाद में वैल्यू देखेगा वो। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं प्राइसिंग के ताल्लुक से। एक और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, मैं लम्स में 1990 में एमबीए जब कर रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर से आए थे, एड फेल्टन, तो ग्रेट प्रोफेसर मार्केटिंग के। तो उन्होंने कोई सवाल पूछा, आई डोंट रिमेम्बर द केस, तो किसी ने कहा कि आई विल चेंज द प्राइस। तो उसने उस स्टूडेंट को कहा कि इकोनॉमिक्स की क्लास 7 वाले कमरे में हो रही है, आप उधर चले जाएं, ये मार्केटिंग की क्लास है। सो यू कैन गेट व्हाटएवर यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, बट आई थिंक प्राइसिंग इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, बट देयर आर मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स प्राइसिंग से बहुत ज्यादा जो प्राइस डिराइव करेंगे। True. So guys, we don't have a lot of time, but then there are some questions. एक सवाल जो है वो जो सबके लिए है वो मैं बाद में पूछूंगी। So I'm gonna ask you these questions, और जिसने इसको बॉल को अगर खेलना है वो प्लीज आप जरूर खेलें। So एक तो क्वेश्चन ये है कि so if a startup is not high on budget, यानी अगर उसके पास पैसे नहीं है, can they use affiliate marketing? ये सवाल आया है, can they use affiliate marketing? कौन इसका जवाब देगा? आप जल्दी से दे जी। आतिफ, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि आप देना चाहते हैं। मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ये बता रहे हैं कि मुझे पता नहीं एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, सो आई एम होपिंग काशिफ साहब विल आंसर दिस वन। ओके, ये बाय द वे कलीम के भरपूर इसरार पर मैंने सवाल पूछा है। कलीम ने क्या सवाल पूछा, मैंने कहा भाई ओके फाइन मैं पूछ लेती हूँ जी, कोई भाई शॉर्ट दे दे। मैं आतिफ की तरह सच्चा आदमी हूँ, मुझे मार्केटिंग के जार्गन से हालांकि मैं पढ़ाता रहा हूँ, मुझे बहुत चिढ़ है, मैं उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अफिलिएट से मेरा मतलब अफिलिएशन से निकला होगा लफ्ज, तो किसी के साथ अफिलिएशन करके आप मार्केट कर लेंगे, मैं उसका इडियट प्रूफ डायसेक्शन कर रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल जार्गन। सवाल का जवाब ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि सवाल ये है कि आपसे क्यों अफिलिएशन कोई करना चाहेगा? अगर आप स्टार्टअप हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आप फकीर फुकरे हैं, तो क्यों कोई आपके साथ, तो अभी आपके जैसा ही होगा कोई जो आपके साथ अफिलिएट करेगा। तो आई थिंक अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल सड़क पे हूँ, तो मेरे साथ कोई आ जाए मार्केट करने। क्यों आए भाई? बिल्कुल। तो कलीम जवाब मिल गया कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग जरा ऊपर डिग्री है, जरा नीचे आए। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है हमारे पास। Okay, so can we talk of customer love as being a leading indicator while revenue and profit are lagging indicators of success? जी आई थिंक फेशियल एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं। जी आतिफ वुड यू लाइक टू? इट्स कौन जवाब दे रहा है? जी सलमान बताइए। सलमान ने हाथ उठा दिया था, हाथ के बाद तो that's a very short sweet and great question, and I think इसका आंसर सिर्फ ये कि जब आप एप्पल की दुकान, जब एप्पल लॉन्च करती थी नया फोन, तो उसके बाहर जब 1 किलोमीटर की लाइन लगती थी, so that is love for the brand। या आपने कोई तस्वीर देखी होगी, एक बंदे ने वो एप्पल का लोगो अपने बाल सारे काट के अपने सर पे सिर्फ अपने एप्पल के बाद, so love जो है वो actually obviously it's a leading indicator for the brand।
and revenue को तो देखना भी नहीं चाहिए. I think revenue is the last thing that you should be looking at. You should create passion. Your passion should translate into the love for the brand from the customer's point of view. And we have seen umpteen examples where people who love the brand and their companies are doing that. So there are a lot of researches that has been done जहाँ पे लोगों का जो love for the brand index हुआ है, and the revenue follows that. So there is no question. So, और लेकिन वहाँ पे सवाल फिर यही है, ऑब्वियसली अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो हमारी जितनी भी आज गुफ्तगू हुई है, वो लव क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली क्रिएट इज अ रॉन्ग वर्ड. वो लव को क्राफ्ट करना पड़ता है. उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है. ये लव ओवरनाइट नहीं आएगा. उसके पीछे अपना लव पहले लेकर आए. तो मैं अक्सर वो टेलकोस को मैं कहती थी कि जब मोबाइल वॉलेट बेच रहे थे, मैं कहती थी यार तुम लोग कितने मोबाइल वॉलेट्स यूज करते हैं. जवाब आता था यार हम नहीं करते. मैं कहूँ खुदा का खौफ करो, और तुम लोग तो यूज नहीं करते हो, तो दूसरों के जो मोबाइल वॉलेट जो है वो इस्तेमाल करें. बट नाउ तो फराज को पता है ना, मोबाइल वॉलेट सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आंसर फ्रॉम सलमान की. सच्चा प्यार के लिए बड़ी मेहनत पहले करनी पड़ेगी, फिर सच्चा प्यार मिले. आई एग्री. सो लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर. सो कहते हैं जी, इफ माय कस्टमर्स आर नॉट फाउंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, how can I reach out to them? Yeah. ये कौन सा प्रोडक्ट है यार जिसका आजकल डिजिटल पे कोई कहते हैं यार हो सकता है कोई एल्डरली हो. Well, this is a question. मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जो काम करता है लड़का, उसको पास वो कहते हैं जरूरत इजाद किया है, तो वो ही वाज टीचिंग माय डॉटर के बैलेंस कैसे लोड करते हैं. तो उसको अपने इजी पैसा करना आता है गाँव में, और बैलेंस कैसे, और फेसबुक पे भी कोई चाइनीज दोस्त हैं, वो मैंने पकड़ लिया था उससे. तो ही ऑल्सो अंडरस्टूड जहाँ उसकी जरूरत थी कि क्या उसको किस तरह डिजिटली होना है एक्टिव. तो आई थिंक ये आज के दौर में, स्पेशली कोविड के बाद, मेरे ख्याल है इवन द एल्डरली हैव हैड टू कम ऑनलाइन टू स्टे कनेक्टेड विद देयर लव्ड वंस. सो आई थिंक कोई, मुझे तो नहीं, मेरे जहन में कोई कैटेगरी आ रही है जिसकी बिल्कुल ही कोई डिजिटल प्रेजेंस. Just one comment. There are other ways of doing it, obviously. So for example, when calling cards were launched, there was this company जिसने अपने कॉलिंग कार्ड्स, फॉर एग्जांपल दुकानों की जो रिटेल थी, वहाँ अपने यूज्ड कॉलिंग कार्ड्स वहाँ नीचे पड़े होते थे. तो बेसिकली कंज्यूमर्स जो हैं वो समझते थे कि ये कार्ड बहुत चल रहा है. एक साबुन लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, जिसको गुरिल्ला मार्केटिंग कहते हैं. एक साबुन लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, तो मुझे याद है हैदराबाद सिंध में, वहाँ उन्होंने एक एक्टिविटी की थी, एक बड़ी सी गाड़ी लेके, और उसके आगे एक पुलिस वाला लगा के, वो गाड़ी बीच बाजार में जाके रुकती थी 2-3 जगह पे, और दुकान से जाके पूछती थी यार वो वाला साबुन है कि नहीं है. तो चाय खाना जब लॉन्च हुआ तो हम डिजिटल पे तो थे, लेकिन हमने लॉन्च उसको बिल्कुल नॉन डिजिटल किया था. हमने हमारे जो बेकर्स थे उनको बेकर की टोपी पहना के सड़क के ऊपर छोटे से बिल बोर्ड टाइप के वो रोड क्रॉस करते थे, जैसे वो चाय खाना की बिल्डिंग में कुछ चीजें लेकर जा रहे हैं वहां से. तो देयर आर डिफरेंट वेज, गुरिल्ला मार्केटिंग, एंड वी गो एंड रीड इट. बट एज काशिफ सेड, वेरी डिफिकल्ट कि कोई इस वक्त डिजिटल पे ना हो. So हम ये नहीं कह रहे कि आपने सिर्फ डिजिटल करना है. एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सलमान दिस टर्म गुरिल्ला मार्केटिंग. गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब, अगर आसान लफ्जों में, जो हाथ आती है चीज वो करें. आपने ट्रैक्शन लेकर आनी है. तो अगर आपने अपने जो स्टाफ है, अगर उसको कैची से कपड़े भी पहनाने हैं और उसको सड़क पे भी भेजने हैं, खुद भी अगर कैची कपड़े पहनने और सड़क पे जाने, डू इट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे यू वांट टू अट्रैक्ट द अटेंशन. ठीक है जी. अब एक हमारे पास सवाल यह है कि भाई सारे जो पैनलिस्ट है ना, वो एक एक किताब का जिक्र करें. तो हमने कुछ लोगों ने किताब का जिक्र कर दिया है. सलमान ने ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की बुक का जिक्र किया है. सलमान, एनी अदर बुक व्हिच यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू आवर ऑडियंस? या आई थिंक देयर इज अनदर बुक, उसका टाइटल है 1 + 1 = 3. I love it. I think it's for marketing people. I think for marketing people, it's a must read. It's great stories of great brands. Yeah. Aisha, would you like to add any book title? Recommend? I want to add a list, but I was trying to type it with the panelists. I don't think I can add to the list that is being shared here. It's quite sophisticated, so no. Okay, so we will get a list. But Aisha, one book title which is like your favorite, the killing book for that matter. Yeah.
For startups? Yeah. Any book, so around marketing, not startups, but around marketing. Can I name one marketing book? At the moment, no. Okay. But I think at the moment I'm reading actually a book about company culture and communication. I think that's where my focus is right now in terms of understanding how to communicate with my peers and also influence them internally. So to create awareness around some key issues. Hold on one second, and I will add it to the list. So Aisha is adding the book title in the list. And by the way, this is very important. तो अगर आपकी टीम आपको मार्केट करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपकी टीम आपका प्रोडक्ट में यकीन नहीं रखती है, तो भाई आप दूसरों को जाके कैसे बेचेंगे? तो जो आपकी अपनी टीम है, they should be falling in love with the product first. अभी आपने देखा नहीं, आतिफ ने कहा कि अगर आप मुझे कोक का कहती तो मैं तो भाग जाता यहाँ से. That is a love for the product. ठीक है? You literally have to, breathe the product, या breathe the service. So ये आपका passion होना चाहिए. Atif, any other book that you would like to add? So, two books actually. I thought about mentioning them even before you brought up this question. Both are by Seth Godin. I think for startups, fantastic read. One is called The Dip. The Dip talks about how there's always an easy start and then a dip before things turn back up. And how do you get through the tough part? And how do you know कि इस dip के आगे recovery भी है या this is a downward slope? So it's a very good book for a startup to know कि जो dip मैं feel कर रहा हूँ in business, is this a crash and I need to exit, or do I need to weather this through and then see it come up? So I think that's a really good book. And the other, again, also very relevant, is called Tribes. It's about how you need to build a tribe around your brand or your product or your idea, and that with the internet and with digital media, how that tribe can now, it doesn't have to be geographically confined, right? You can have like I know people जो आज तक मैनचेस्टर नहीं गए मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं. That team has crossed beyond the geography, right? So two of those books, Tribes and The Dip, both by Seth Godin, I think good reads for startups. Kasha, would you like to add any other? जी हाँ, एक तो एरिक राइस की लीन स्टार्टअप, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो इटरेशन की हम बात कर रहे थे, एमवीपी की बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छी तरह उसमें समझाई गई है. उसके बाद उसकी एक और फॉलो अप भी बुक है. दूसरी एक बॉटम अप मार्केटिंग आई वुड रिकमेंड, जो एक पुरानी किताब है राइज और जैक ट्राउट की, बट आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ ये जो टॉप डाउन वर्जन है जिसकी आप भी बात कर रहे थे, उसको ये ब्रेक करता है बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी प्रैक्टिकल वे of building a strategy, which I love, and I've still followed it over 25 years across multiple industries, petroleum to leke B2B and then FMCG. I've seen it work in all categories across markets. So I think से भी आपको ये पता लगता है कि mental competitive angles क्या होते हैं और किस तरह एक direction set होती है अगर आपको वो मिल जाए. Perfect. So I just want to add to that list because I didn't name a book, but I'm hoping that the listener base here also listens to podcasts. So I'd like to suggest a couple podcasts. One being Future Commerce. It's all about the future of retail. Another one that I love is called Decode Recode with Kara Swisher. It's all about tech startups and tech entrepreneurs based in Silicon Valley and I would say the pitfalls and the successes that come along with that. And then Adam Grant, it's called The Look and Sound of Leadership by Adam Grant, which I think is another great podcast. So hopefully that can guide the audience in a couple new ways as well. No, thank you. And by the way, although मैं PhD हूँ और काशिफ ने कहा आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, and I was just all right, cool. So जैसे आयशा पॉडकास्ट की बात कर रही है ना, वो मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह मैंने वो 20 साल पहले पैदा कर दिया था. मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता.
और जो काशिफ बात कर रहे थे ना कि वो गूगल है आपके पास, मैंने तो हर बुक को इवन अपनी पीएचडी में भी गूगल से पहले ढूंढा कि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता करनी है किस बुक में मिलेंगे, तो गूगल आपको ले गया उस पेज के ऊपर, मैंने वो पेजेस पढ़ दिए, इतनी इंटेलिजेंस थी कि वो यू जस्ट कनेक्टेड द डॉट्स। तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कवर टू कवर बुक को, इतना पेशेंस नहीं है उन गरीबों के पास कि वो पढ़ सके। और स्टार्टअप की लाइफ तो इतनी परेशान कौन है, मैं आपको बता सकती हूँ कि वो तो बहुत मुश्किल है। However, just to wrap up our very exciting discussion. So guys, thank you for joining us. I think I have learned a lot, and I'm sure our viewers have also enjoyed the session. As we are wrapping it up, मेरे ख्याल में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कलीम, आई एम सॉरी, वो आपने कहा था कि मैं हर एक से एक एक सेंटेंस कुछ ले लूं एंड में मार्केटिंग का। आई थिंक दे हैव टॉक्ड अबाउट ब्रिलियंट स्टफ ऑलरेडी, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि ऑडियंस को राइट चीज जो है वो पहुंचे। दो आर guests are from the corporate world, but I think they have done a fantastic job. So Kareem, do you want to say anything? Last comment from you, because we all have to leave now. Over to Kareem. जी डॉक्टर फरा वैसे भी मेरी उस्ताद रही है, मैं तो थोड़ा सा ऑडियंस को बता भी दूं। सर बिजनेस स्कूल में, लम्स बिजनेस स्कूल में जो सलमान भाई अब 90 में, सो मैं इनका काफी जूनियर हूँ। ही वेंट इन 90, आई वेंट इन 2014, तो 25 साल बाद जब आपको कहा ना कि हार्वर्ड के प्रोफेसर ने कहा था, तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि जब मार्केटिंग का कोर्स हो रहा था, तो दैट मोमेंट एक्चुअली दैट अकर टू मी। तो मेरे से जो उस टाइम लुकमान साहब वो सेशन ले रहे थे, और आई रिक्वेस्टेड हिम कि वो आज उसके पैनल में आ जाए, लेकिन अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने मुझसे कोई प्राइसिंग की बात की, तो मैंने उन्हें इसी तरह से बात की कि वी शुड एक्चुअली लोअर द प्राइसिंग फॉर दैट। तो उन्होंने कहा कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू इजी फाउंडेशन, अगर तुम्हारी ये सोच की जॉइन इजी फाउंडेशन। तो जब आज आपने बात की तो वही वाली सारी बातें वो ज़हन में आ गई। बात डॉक्टर फरा, थैंक यू वेरी मच, आपकी बात घर पे आखिर है। सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं। कुछ लोगों ने बुक्स का फसी, अनम, हमारे कुछ और इकोसिस्टम में बड़े इंपॉर्टेंट लोग वो भी अटेंडेंस है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि यहाँ पे चैट में भी लिखा हुआ कि नाम जो पॉडकास्ट के हैं और जो बुक्स के हैं वो कर दें। I will try to just write down names. मेरे खुद भी नहीं लिखे, so but these sessions are available in Pakistan Startups Group and on Patari page, and I guess on NIC page as well. So there is a whole audience which is sitting over there as well. Thank you very much जी। Affiliate marketing पे किसी ने बात की थी, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, since it is more of a tech thing, so let's cover that in digital marketing thing. इसके बाद जो सेशन है, we will have 4 speakers in that session. बदर खुशनूद होंगे फिशरी से, उस्मान लतीफ होंगे, सो जो सोशल मीडिया कंसल्टेंट है, इसके अलावा हारिस खान होंगे, अगेन कल भी हमारे साथ है, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं। सो अनम उस सेशन को होस्ट करेंगी। साउथ बिन यूनस होंगे, टेलेनॉर से इजी पैसा की ग्रोथ को देख रहे हैं। अच्छा, उस सेशन को हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऐसे बनाया कि वी हैव गिवन देम अ केस। मिसाल के तौर पे हमने बदर को केस दिया कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, assume you are nobody, you are not बदर खुशनूद, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने एक बिजनेस शुरू करना है, आप 4 माह में ये वाले गोल्स कैसे रीच करेंगे। So 2 p.m. for that session. Thank you very much, everyone. It has been amazing session. Thank you so much, Kashif Saab, Atif Saab, Salman, Aisha. It is almost 1 a.m. in your zone. Thank you, Dr. Farah. That was very engaging session. So thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you. Take care. Bye. Great connecting with you. Thank you so much. Thank you. So अगर कोई ऑडियंस स्टिल यहाँ पे है,